ये तीन चीजें हैं जो हमेशा तुम्हें याद रखनी है whenever you really want to boost your business with the power of video. See, video making is all about skill. It's very easy to pick up cell phone and click the record button and start speaking whatever knowledge, whatever information, whatever content we already have in our brain. Video कोई भी बना सकता है आज. You also can make a video right now after watching this video. But still, people are not making video consistently, constantly, and they are not sharing quality content to their audience. मैंने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, डिलेइंग, आई वाज नॉट रिसर्च thoroughly, and that's the reason I was not able to make consistently quality video. What I mean by quality is all about content quality. Okay, many people get into the trap of they need to have a good camera, good background, good lighting, and good blah 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 blah, all those things. But let me tell you, video banana is not only about equipments. I understand ये equipments बहुत जरूरी है, but फर्स्ट आपको काम करना है ऑन योर सेल्फ, ऑन योर कॉन्टेंट. तो जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वेरी सून मुझे समझ में आ गया वीडियो मेकिंग इज ऑल अबाउट creating content which your audience are actually looking for and solving their problem. That's it. Video is just a form of content which your audience are going to watch, they are going to consume, and they are going to get benefit out of it. That's it. If you really want to master this video making skill, you really have to understand three important things which is going to help you to grow your video making skill to the next level. First and foremost is video itself. तुम्हारा video बहुत 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 अमेजिंग होना चाहिए. What I mean by this? See, I'm not again talking about आपके क्वालिटी ऑफ वीडियो, आपका अच्छा कैमरा होना चाहिए, या यू शुड हैव अमेजिंग बैकग्राउंड, या स्टूडियो में ही आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है. नो, वीडियो आप इस मोबाइल फोन में भी रिकॉर्ड कर सकते हो. सो इट्स नॉट ऑल अबाउट इक्विपमेंट्स. ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट नहीं है बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट मेकिंग वीडियो. आप वीडियो कंसिस्टेंटली इसके लिए नहीं बना रहे हो बिकॉज यू डोंट नो how to be consistent on that particular journey. So first thing you need to understand, video itself has to be amazing. So the point is, आप जब वीडियो बना रहे हो, it's not going to be any topic in the world which no one have ever created similar kind of videos like that. आपको ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा ऑन इंटरनेट कि जिसके ऊपर वीडियो बनी नहीं है. Someone in the world, कोई भी ऐसा होगा या किसी ने ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका है. ठीक है, और एल्स इन फ्यूचर ऑल्सो देयर विल बी समवन विल कम एंड स्टार्ट मेकिंग वीडियो अराउंड दैट टॉपिक. सो आपको ये कंफ्यूजन नहीं लाना है माइंड में कि ये वीडियो ऑलरेडी किसी ने बना हुआ है, सो व्हाई शुड आई मेक दिस वीडियो और व्हाई शुड आई क्रिएट कंटेंट अराउंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ऐसा नहीं है. सी, द ऑडियंस आर रियली लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स. हियर व्हाट यू कैन डू, आप सिमिलर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन योर वीडियो आपको आपका फ्लेवर डालना होगा. यू हैव टू ऐड योर ओन यूनिकनेस. एवरीवन हैव अ डिफरेंट यूनिकनेस. आपका यूनिकनेस अलग है, मेरा यूनिकनेस अलग है. ठीक है, you have a different perspective, different opinion, different thought process about the same topic. Okay, so when you start making video, you will make that video with your own flavor, and once you add that flavor, because of that flavor, because of that vibe, because of that intention, people are gonna attract towards you और वो आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब भी वीडियो मेकिंग सीख रहे हो, it's very very important that video itself should have a good value and quality. Second thing you need to understand is consistency. See, as a coach, as a trainer, as an entrepreneur, you have to show up every time. See, internet is so fast. People are consuming, people have their smartphone and they just keep on scrolling that particular social media feed. They don't have a time. They don't spend time on that particular one video. So it's very important that you maintain that consistency. See, what happens, as per my experience, when I started at my early stage, when I started my video making journey, that I used to make video, but I had a lot of unrealistic expectations that I'll make a video, I'll get lots of comments, views, and I'll start generating leads and everything like that. So similarly, it's going to happen with you as well. You will also have a lot of unrealistic expectations of your videos. एक वीडियो पोस्ट करोगे और शाम तक उसको देखोगे कि मुझे व्यूज नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, लोग शेयर नहीं कर रहे, लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही है. यू विल हैव दिस एक्सपीरियंस और आपको इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से गो थ्रू करना होगा. यू शुड फील दैट पेन, यू शुड फील दैट अनकंफर्टेबलनेस कि आप इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हो, इतने मेहनत से एडिट कर रहे हो, इतने मेहनत से शेयर कर रहे हो. बट
I want you to feel that thing, because until and unless आप वो journey को pass on नहीं करोगे, till the time you won't be able to understand what exactly video making is all about. Because see, consistency in video making goes hand in hand. If you really want to master this video making skill, consistency को आपको लेके ही जाना होगा. Consistency नहीं है, then you will make some 10-15 videos, you will again go back and busy with your 9 to 5 job or any other business or any other regular activities. Again कुछ होगा तो आपको फिर से इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने के लिए. अगेन यू विल कम बैक एंड एक महीने के बाद फिर से कुछ वीडियो बनाओगे. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क माय फ्रेंड. ऐसा नहीं होता है. वीडियो को आपको कंसिस्टेंसी रखना है. सी, आई एम नॉट टेलिंग यू टू क्रिएट वीडियो एवरी सिंगल डे. यू कैन सिलेक्ट योर डे और टाइम, और उस टाइम में बहुत सारे वीडियो बनाओ. यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट, यू कैन क्रिएट सम स्टोरीज, right? You can create 1-minute video. It's enough to show up. The point is you got to be consistent and you got to be show up every time, because your audience already watching lots of other videos where you might miss their attention. Third important thing when you are making video is clarity about your audience. See, it's very 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 important that मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ. मेरे माइंड में ऑलरेडी मुझे क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये वीडियो है पेरेंट्स के लिए, मेरा ये वीडियो है टीचर्स के लिए, मेरा ये वीडियो है हाउसवाइफ्स के लिए. सो यू शुड हैव दैट क्लैरिटी वॉट एवर इट मे बी. सो यू नीड टू हैव अ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी इन योर ब्रेन कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट मेरा आइडियल ऑडियंस कैसा होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, वो कहाँ पे रहता होगा, व्हाट इज दैट लोकेशंस वेयर दे स्टेज, इज इट टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज, वॉट एवर इट मे बी. बट अगर उस चीज की क्लैरिटी नहीं है, then you will always keep on jumping from here and there, and you will always keep on changing your topic. Because consistency is very important, but उसके साथ उस टारगेट ऑडियंस को कंसिस्टेंटली वीडियो पहुंचाना भी बहुत जरूरी है. So these 3 important things you need to always carry in your brain, that video itself, video should have amazing quality. Second है आपका consistency. Third है आपका targeted audience. You need to have a clarity in your mind that who is my targeted audience. मैं वीडियो किस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा ऑडियंस का क्या बैकग्राउंड है. So you need to have crystal clear clarity in your brain, and once you start carrying this all 3 things in your brain, wonders start going to happen in your video making journey. Because ये जब भी चीज होगी, automatically you will start creating amazing piece of content, and that is going to help you in order to build a particular strong relationship and trust between you and your audience, and that is going to help you to grow your business to the next level. All right, so I hope you got some clarity on this video making journey and video making skill. I hope you will implement this in your business. I don't want you to just consume here. Make sure you implement this 3 important things in your business and grow to the next level. If you like this video, make sure to click on the like button, and if you have any questions, you can ask me on the comment sections. And if you have interest in our video making skills, storytelling and content creation, make sure to click on the subscribe button, because I'm going to pull a lot of content around this topic, which is going to help you to master video making skill and grow your business to the next level. Wish you all the best. I will see you in the next video. Good luck.